नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। अरविंद केजरीवाल करता लोकांची दिशाभूल, काँग्रेसीच्या अजय माखनाचो आरोप। केजरीवालान गोंयाक जाहीर केल्ल्या एजेंडांतलो एकय दिल्लीत लागू केला जाल्यार दाखोवचो राजकारण खंय सोडटा। मायनिंग बंदीक जबाबदार बीजेपी न्हय, दिगंबर कामत आनी ताचे सरकार जबाबदार। बीजेपी फुडारी सीटी रवीचो काँग्रेसीचेर पलटवार। मायनिंग घोटाळ्याक लागून मायनिंग उद्देग बंद। बीजेपीक गोंयच्यान 2022 जाल्यार देशांतल्यान 2024 भायर काडपाक टीएमसी वचनबद्ध म्हणटा महुआ मोइत्रा। पक्षांनी घेतिल्ले सोपूत आनी एफिडेविटाक खंय कायद्याक कांयच म्हत्व ना। गोंयांत बीजेपी फेल, गोंयच्यो समस्या लिपोवपा खातीर वेंचणूक येताच बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे काडटा। शिवसेनेची टिका, आदित्य ठाकरे म्हणटा गोंयकार ह्या फावट बीजेपीक घरा धाडटले। आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक अरविंद केजरीवाल लोकांची दिशाभूल करता म्हण काँग्रेसीचो सरचिटणीस अजय माखनाचो आरोप। केजरीवालान गोंया खातीर 13 पॉयंटांचो एजेंडा जाहीर केला, मात तातूंतले एक सुद्दां दिल्लीत चालीक लायिल्लो ना म्हण तो सांगता। लायला आसत जाल्यार दाखोवन दिवचो राजकारण सोडटा म्हणटा जी ओपन चॅलेंज। कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 13 पॉइंट एजेंडा यहाँ पे गोवा के अंदर दिए, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि पहले उसको दिल्ली में तो इंप्लीमेंट करिए जहाँ पे 7 साल से आप पावर में। तो जो 13 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें से एक भी पॉइंट दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। और ये मैं दिल्ली से एक जिम्मेवार पॉलिटिकल आदमी होने के नाते कह रहा हूँ और आम आदमी पार्टी को चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर ये 13 पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पर गोवा में प्रॉमिस किया है, अगर उसमें से एक भी पॉइंट बता दें दिल्ली में उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, तो मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। When does Mr. Modi come here? Goa as well as other states are only a election destination for Mr. Modi. He only comes here for elections. When does he come here otherwise? And therefore, who is he to tell us it's a tourist destination? For him, it's an election destination. Has he come between the two elections? But in Goa, in the current context, only the Congress can replace the BJP. What happened in 2017-19 will not happen. Will not happen. We are guarding our house very well, and we will, once we have the numbers, form the government. Not a minute will be wasted in making a claim to form the government. There is a tremendous resentment and there is a negative wave against the Bharatiya Janata Party. People are fed up of 10 years of misrule of the Bharatiya Janata Party and they want to change the present setup and they want to bring in a new setup. That is very, very clear. The second thing that is very clear is that Congress party has emerged as the only party which can take on the Bharatiya Janata Party, and there is a huge positive wave towards the Congress party. Once the tickets were announced, we have seen many, many parties trying to occupy the space which the Congress party holds. Political parties like AAP and TMC have tried to come and occupy that. But if you look at the entire state of Goa today, in all the 40 constituencies along with the Goa Forward Alliance, it is Congress party which is fighting in each and every seat, and this alliance, Goa Forward and Congress Alliance, is set to sweep these elections. So because the people of Goa want a stable government, people of Goa want a change in the politics, and some of our candidates are here. Many of them obviously could not come because today is the last day of campaigning.
But we have given a new vision of Congress to the people, and that has convinced the people that not only has Congress changed in its approach, but Congress is more determined, and our campaign has been very, very clean. We have only given promises that which we can deliver. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसीने केल्ल्या मायनिंग घोटाळ्याक लागून गोयचो खण उदेग बंद पडलो म्हण सीटी रवीचो आरोप. काँग्रेसीन मायनिंग घोटाळो करून लोकांक त्रासांत घाले. तांणी लोकांची माफी मागची म्हण रवी मागता. गोयच्या उदरगती खातीर परत एक फावट डबल इंजिन सरकार हाडचे म्हण ताचो उलो. हर जगह में डबल इंजन का सरकार का लाभ गोवा जनता का मिल रहा है. इसके लिए हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, स्वयं पूर्ण गोवा, और पर्रिकर जी का सपना था गोल्डन गोवा. गोल्डन गोवा स्वप्न पूरा करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रहा है. आप सोचिए, एक बैलगाड़ी में एक बैल और एक रेड़ा बांध सकता है क्या? सेंट्रल में बीजेपी सरकार है. गोवा डेवलपमेंट करने के लिए इधर कांग्रेस रेड़ा बांधेगे तो डेवलपमेंट का गाड़ी पानी में डूब जाएगा. इसके लिए रेड़ा गोवा जनता बांध नहीं, और ये बेला भी बांधना हमारा विनती है. बेला केवल बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी. 2 बेल बांधने के बाद डेवलपमेंट का गाड़ी, विकास का गाड़ी सही रास्ते में चलेगा. अदरवाइज एक रेड़ा एक बेल बांधेंगे तो विकास का गाड़ी पानी में डूब जाएगा. 14 तारीख सोच करके विकास का बंडी सही रास्ता में चलने के लिए वोट देना सभी गोवा मतदाताओं को हम विनती करता हूं. आज दिगंबर कामत ने और कांग्रेस पार्टी ने माइनिंग घोटाले के कारण है, हम नहीं है, भाजपा नहीं है, केवल कांग्रेस ही कारण है. इसके लिए गोवा जनता को क्षमा मांगना चाहिए. आपके वजह से गोवा लोग परेशान हुए. कुछ लोग बहुत परेशान किया है, उसके वजह से आप क्षमा मांगना चाहिए. कांग्रेस जमाने में गोवा लूटने का काम किया है, हम डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है, वे लोग लूटने का काम किया है. आज स्थिर सरकार दे सकता है केवल भाजपा. डेवलपमेंट कर सकता है, अच्छा तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है केवल भाजपा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहा प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. बीजेपीक गोंयच्यान 2022 जाल्यार देशांतल्यान 2024 भायर काडपाक टीएमसी वचनबद्ध आसा म्हण टीएमसीची गोंय प्रभारी आनी लोकसभा खासदार महुआ मोइत्रा उलयल्या. टीएमसी आनी मगो एकठांय जावन बीजेपीक भायर मारतले. पक्षांनी घेतिल्ले सोपूत आनी एफिडेविटाक खंय कायद्यांत कांयच म्हत्व ना. गोंयकारांनी टीएमसीक मत दिवचें म्हण तिचो उलो. The one message we want to put out across is that the Trinamool Congress is committed, very strongly committed, to removing the BJP not just from every state government that they are in, but also in 2024 from India. And keeping that in mind, the fight that we are fighting along with the MGP is absolutely to oust the BJP. There is no other goal that we have in mind. We are the only, I would say, political player here who is absolutely focused on defeating the BJP.
We are not interested in any other side deals. We are not interested in anything else. All we want and all Mr. Davdekar and his party want are to get the BJP out of Goa. And this is what is binding us together. We see a lot of people signing pledges and signing affidavits in places of worship. That actually is quite amusing to us, because given the history of Goa and given that the anti-defection law itself allows 2/3 of a party to go across, and that it has been a toothless law so far in India, we think that it is far more important for us to come out and to show people that we are committed than to sign and make hollow promises like signing affidavits, which have no legal standing whatsoever. We ask Goans today to think of the big picture. The big picture in Goa is there is environmental pollution and there is political corruption. These are the two main issues here. It is the environment that is polluted, and it is also the political environment which is polluted, both ways. The big issues in Goa today are corruption, which has probably got the highest corruption across all levels of normal life that a citizen has to face than perhaps any other state in India. Unemployment is absolutely terrible. Youth unemployment is upwards of 25%. Healthcare is non-existent. There is absolutely no social welfare net for the majority of Goans. And one of the main things that every Indian, no matter how poor, depends on is security as far as land rights are concerned. In Goa, a majority of the people, post 1976 Land Rights Act not being implemented, the issue today is that most people live on leasehold land and do not have freehold rights to their own home. These are the four main issues. The Trinamool Congress is fighting on the basis of the basics. We are not promising the earth. What we need to get to every Goan household are three schemes. One is a direct benefit transfer, a direct cash payment of 60,000 rupees to every female head of household in Goa. The second is a 20 lakh rupee line of credit to every youth between the ages of 18 and 45. And the third is that we are promising land rights, freehold land rights to people who are currently in tenancy. These are the three main issues on which we are going to the polls. We would ask every Goan to honestly come out and vote for change this time. So far, you have always had a binary option. Either you have the BJP and either you have the Congress, which loses 15 of its MLAs to the BJP. So that is the problem here, is that you have voted in a party with the single largest majority that historically has not been able to form government. We do not want matter to come to a pass like that anymore, and this is why the two of us are here, the MGP and the Trinamool are here. We ask the voters to press the button on the 14th early on. Please come out in large numbers, vote for change, vote out this government. The Trinamool Congress in 4 months has established its presence in Goa, is a fighting force, has reached every corner. People have supported us in huge numbers. We just want that support to be executed further on polling day, 14th of February. गोंयांत बीजेपी फेल. गोंयच्यो समस्या लिपोवपा खातीर वेंचणूक येतनाच बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे काडटा म्हण शिवसेनेची टिका. गोंयांत शिवसेनेन 11 उमेदवारांची टीम उबी केल्या. उत्पल पर्रीकाराकूय उघड तेंको दिला. गोंयकार ह्या फावट बीजेपी घरा धाडटले म्हण आदित्य ठाकरे उलयलो. आदित्य ठाकरेच्यान शिवसेनेचो जाहीरनामोय उजवाडायलो. I think largely politics has become, because of one particular party's narrative, politics of divisiveness, politics of hate, and irrelevant issues to the election. Whenever there is an election that goes a little on the edge, irrelevant issues are brought up to that election. Of course, they're relevant to the society, they're relevant to the country, but not at that moment. The local issues are ignored, states' issues are ignored, and it's put on a different pitch. So, of course, I would put my views as this. बिलकुल नाही, जे काही असतं ते खुलेपणात असतं. राऊत साहेबांनी जाहीर केलेलं की जर उत्पल पर्रीकरजी लढत असतील स्वतः आणि त्यांच्यासमोर जे काही उमेदवार आहेत, जर अशी काही लढत झाली तर आम्ही मागे घेऊ. आमच्याकडे वेलिंगकरजी बसले, मी त्यांचं पण आभार मानतो, कारण त्यांनी स्वतःहून पक्षाचा जो काही एक विनंती होती ती मान्य केली. पण एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की शिवसेनेने जी काही मैत्री जपायची होती ती खुलेपणे जपलेली आहे. जे काही बोलायचं होतं ते खुलेपणात झालेलं आहे. आणि असंच साफ आणि स्वच्छ मनाने आम्ही जो काही त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे पर्रीकरजींना, तो साफ आणि स्वच्छ मनाने दिला. कुठेही छुप्या बैठका झाल्या नाहीत. नाही, इथे काटेकोरप्रमाणे आम्ही
त्याच पद्धतीने जसं महाराष्ट्रामध्ये आम्ही पर्यावरण जपत आहोत आणि विकास करत आहोत, शाश्वत विकास करत आहोत. मला वाटतं कुठेही दुसरीकडे देशात उदाहरण नसेल जसं शिवसेना तिथे आणि महाविकास आघाडी करत आहे, तसंच आम्ही इथे कार्य करू. जे काही पर्यावरणासाठी चांगलं करायचं आणि लोकांसाठी चांगलं करायचं ते आम्ही करू. ई वचननामा हा गोव्यातल्या जनतेपर्यंत पोहोचलेला आहे. पण मी आदित्यजींना विनंती करतो की त्यांनी तो फक्त एकदा आपल्यासमोर प्रसिद्ध करावा. डिफेक्टरांक उमेदवारी दिवचे ना म्हण काँग्रेसीन गोयच्या लोकांक उतर दिल्ले ते पाळे. आम्ही बऱ्या तरणाट्यांक तिकेट दिल्या. अमित पाटकाराच्या रुपान तुमच्या मुखार उदाहरण आसा म्हण काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी कुडचड्या जाहीर सभेत उलयलो. ताका लोक निश्चितच जिखयतले म्हण राहुल गांधीक विश्वास. स्थायी रुपान कायदेशीर मायनिंग सुरू करतले म्हण राहुलाचे उतर. खंयचोय निर्णय खंय लोकांक विश्वासांत घेवनच घेतले. जो भी निर्णय हम लेंगे हम आपसे पूछकर, आपसे बात कर कर, आपकी बात सुनकर हम निर्णय लेंगे. माइनिंग बैन से आपका नुकसान हुआ. यहां पे माइनिंग एरिया है, आप जानते हो. कांग्रेस पार्टी सस्टेनेबल तरीके से, लीगल तरीके से माइनिंग को फिर से शुरू करेगी. आपने कहा था हमें डिफेक्टर्स को कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए. हमने एक डिफेक्टर को कैंडिडेट नहीं बनाया. आपने हमें कहा कि इस बार युवाओं को मौका देना चाहिए. हमने कैंडिडेट लिस्ट में युवाओं को मौका दिया और एक उदाहरण आपके सामने बैठे हैं. और मैं जानता हूं, बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं आप इनको चुनाव जिता रहे हो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. हाता तोंडाची नितळसाण राखात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.